Dr. Kamini Rao Hospital, a legacy of excellence in human health sector. Yes, my dear friends, Dr. Kamini Rao Hospital, a unit of Medline Academics. This hospital represents not just a new milestone but a heartfelt continuation of Padma Shri Professor Dr. Kamini A. Rao unwavering dedication to women's healthcare spanning from menarche to menopause and behind. For over 40 years, Dr. Kamini Rao has been a beacon of a hope, touching countless lives and shaping the future of healthcare in India and behind. Honoring remarkable journey, women's healthcare in India has undergone a transformative evolution, with the IVF industry alone now valued at $95 million. Dr. Kamini Rao contribution have been instrumental in shaping this growth alongside her broader effort in addressing the holistic needs of women's health. After completing her training in the UK, she returned to South India to pioneer reproductive medicine and holistic care, establishing milestones that continue to inspire. In our government sector, completely for the government. Plus, we would like to maintain that also. See, putting a center, inaugurating a center, coming out is different. Are interested in developing our state, we would like to join hands with you in the reproductive medicine sector, and I would like to sponsor, we would like to sponsor from Kamini Care Foundation to set up the entire unit in the government sector and maintain it for some. At a subsidized price. Yes, it will be subsidized, but more importantly, the space will be there, that infrastructure will be there, the equipments we will put. Because ये the equipments are... आज हमने इधर डॉक्टर कामनी राव हॉस्पिटल लॉन्च किया। मैं डॉक्टर कामनी राव का बहू हूँ एंड डॉक्टर कामनी राव मैम का उसकी बेटी डॉक्टर वैष्णवी राव है। हम दोनों मिलके मम्मी का लेगेसी आगे लेके जाना चाहते हैं हम लोग। इसी की वजह से हम लोग ये हॉस्पिटल को लॉन्च किया थ्रू आवर फैमिली फाउंडेशन। कामिनी केयर फाउंडेशन है हमारा एक। सो उस फाउंडेशन से हम लोग सर्विस करना चाहते हैं। जो भी महिला या जो भी पुरुष उनको प्रॉब्लम है टू कंसीव, और महिला के लिए मेनार्के टू मेनोपॉज जो भी प्रॉब्लम होगा, बीपीएल और जो भी कैंडिडेट्स है उसको वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना, उसको हमारी फाउंडेशंस के थ्रू एप्लीकेशंस को कलेक्ट करके वेरीफाई करके हम उसको वर्ल्ड क्लास ट्रीटमेंट देना चाहते हैं इस सेंटर पे। कैसे आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा? अगर आपको सीधा पेशेंट्स आना चाहिए तो हमारा कांटेक्ट नंबर है 23561044 या 45। आप ये नंबर्स पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अगर आप फाउंडेशन से थ्रू, अगर इफ यूर बीपीएल कैंडिडेट एंड फाउंडेशन से थ्रू आप लोग आना चाहते हैं तो सो कामिनी केयर फाउंडेशन.com से में एप्लीकेशन डालना चाहिए आप लोगों को। अभी 2 ब्रांच है, एक इधर कुमारा पार्क में है और दूसरा जयनगर में है। हम लोग आगे और ब्रांचेस एक्सपेंड करना चाहते हैं। टोटली हमको डॉक्टर कामनी राव का नाम रोशन करना चाहते हैं हम। जो पब्लिक ने हमको इतना प्यार दिया और इतना सम्मान दिया मम्मी को, हम लोग अभी पब्लिक को वापस कुछ करना चाहते हैं। सरकार को कुछ कहना चाहते हैं? मेरा विनती है हमारा कर्नाटक गवर्नमेंट से कि हमें प्लीज एक जगह दीजिए गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। हम लोग मम्मी के नाम पे एक आईवीएफ यूनिट डालना चाहते हैं। सो वहां पे आप लोग हम लोग उसको मेंटेन भी करेंगे, आपकी डॉक्टर्स को भी हम लोग ट्रेन करेंगे और बहुत कपल्स और महिला, स्पेशली महिलाओं को बहुत हेल्पफुल होगा इस प्रोविजन से।
अभी तक नहीं दिया मैं उनसे मिलके अभी तुरंत देना चाहती हूँ. सो प्रेस से विनती करती हूँ कि प्लीज आप ये हमारे लिए थोड़ा सा कीजिए. अच्छा, infertility affects almost 10 to 15% of people, and it is very, very debilitating. Therefore, we would like to treat all classes of people with quality treatment, and we would like to treat all classes of people, and we would like to give the best treatment with the latest research and the latest innovation. And we have found that the results will be much, much better, affordable, accessible, and I would like to say that the prices will be competitive in the market. We also have a foundation called Kamni Cares Foundation, where we will select patients that can get free treatment. The drugs only they will have to bear, and we will look forward to seeing many more of our corporate social responsibility, so that we are also providing this kind of treatment, because we believe that we need to give back to the society of what we have actually got from it. The people, the love that they have given to me all these years, and the recognition that I have got from the Karnataka government and the government of India has been enormous. And I thank the government for giving me this opportunity. The message for the government in Hmm? I would love to open a hospital, an IVF center in Bangalore, and I would request our Honorable Health Minister, Shri Dinesh Gundurao, if he can provide the infrastructure in the government hospital in Bangalore, so that I could bring the instruments and I could train the doctors there, plus also treat the patients over there, so that it will be subsidized, and also that the patients will be able to afford the treatment. The high treatment in the private sector can be very, very difficult for the government patients to afford. I look forward to a positive response from our health minister. Thank you. Thank you.